Children, these are the audio corrections for question number 18 to 24 in TS Rival and question number 4, 5, 6 from DK Goel. Children, question number 18, Ramesh and Umesh are partners. Firstly, children, we'll pass entry for transfer of assets. It will be realization account debit to debtors 2,40,000, stock 130, to furniture account 2 lakh, to machinery account 9,30,000. Then children, we'll be transferring creditors on the so-called realization account. Journal entry would become creditors account debit to realization account. Children, for workman compensation reserve, you can transfer it to realization account. Entry will be workman compensation reserve account debit to realization, or you can directly transfer to partners capital account as well. Then children, for Ramesh's current account on the liability side, journal entry will become Ramesh's current account debit to Ramesh's capital, and for Umesh's current account, children, journal entry will become Umesh's capital account debit to Umesh's current account. Then children, general reserve will be distributed among partners. Entry will be general reserve account debit to Ramesh's capital account to Umesh's capital account. Thereafter children, from the adjustments, Ramesh took over stock at 50% at 10,000 less than book value. Entry would be Ramesh's capital account debit to realization. Remaining stock is sold, children. Entry will be bank account debit to realization account, because in the balance sheet it was bank. And debtors realized at a discount of 5%, children. Entry would be bank account debit to realization account. Then children, for furniture taken over, entry will be Umesh's capital account debit to realization, then bank account debit to machinery. For creditors paid, entry would be realization account debit to bank, and thereafter children, for unrecorded liability, entry will be realization account debit to bank 1,40,000. Then children, journal entry for realization profit loss will be done and settlement among partners. Question number 19, children, first and foremost, entry for transfer of assets would be passed. It will be realization account debit to building, to investment, to debtors, to bill receivable, to goodwill. Then for liability transfer, children, we will have PFDD account debit 4,000, creditors account debit 80,000, Mrs. Pradeep's loan account debit 40,000, children, investment fluctuation fund account debit 8,000 to realization account. Then children, at the start of the question it is said commission मिल रही है partner को. Pradeep was deputed for the same. He was paid 1,000 commission for his services. Journal entry will become realization account debit to Pradeep's capital 1,000. Then children, for adjustments, the entry for A part would be realization account debit to Pradeep's capital account 40,000. Then children, bank account debit to realization 12,000. एंड चिल्ड्रन रिमेनिंग डेटर्स 25% ऑफ द क्रेडिटर्स के लिए यूज़ हुए हैं, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, बट बाकी के क्रेडिटर्स को हमको पेमेंट करना है, वो एडजस्टमेंट नंबर ई पे है. देन चिल्ड्रन, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश. सोल्ड मीन्स राजेश ने पैसे दिए बच्चों. आप इसमें सो कॉल्ड टेकन ओवर की एंट्री भी कर सकते हैं, बट व्हेन द वर्ड इज सोल्ड टू राजेश, चिल्ड्रन, इट मीन्स राजेश इज गिविंग द मनी. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंड नॉट राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. Then for building realized, children, it's bank account debit to realization 1,52,000. Remaining creditors means children 60,000 में 20 के creditors B adjustment में settle हो गए, बचे 60,000 के children. इनको हमने 54,000 per annum, sorry children, 10% per annum discount है. children आप 60,000 का 10% calculate करेंगे, जो 6,000 आएगा, 2 months का discount 1,000 होगा, तो we'll pay them 59,000. Entry will be realization account debit to bank 59,000. Then children, bank account debit to realization 36,000. Bill receivable से realize हुआ. And then children, realization expenses amounted to 2,500 rupees. Children, we'll pass the entry, that is realization account debit to bank. Thereafter children, for profit loss and settlement among partners. Question number 20, children. Entry for transfer of asset, realization account debit to stock, to debtor, to furniture, to plant, to investments. Then children, on the liability side, we have liabilities which will be transferred in the following manner: creditors account debit, EPF account debit, Mrs. Ashish loan account debit, WCF account debit, investment fluctuation reserve account debit to realization account. Children, in the previous question, that is question number 19, I have told the entry is related to realization only, but
There are certain more entries, you can mark them up. For payment of Rajesh loan, children, entry will be Rajesh loan account debit to bank, and on the asset side we had PL, entry would be Pradeep's capital account debit, Rajesh's capital account debit to PL account. Coming down to question number 20, children, we'll transfer accumulated loss. Entry would be, children, Ashish's capital account debit, Kanav's capital account debit to profit and loss account. Then, children, Kanav's loan account debit to bank 35,000. This entry will be passed later on because this is not going to affect realization account. Moving down to the adjustments, children, Ashish agreed to take over furniture at 38,000 and pay off Mrs. Ashish's loan. So, children, journal entry will become Ashish's capital account debit to realization for taking over furniture at 38,000, and then, children, realization account debit to आशीष कैपिटल अकाउंट जो उसने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया. देन चिल्ड्रन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेटर्स 18,500 एंड चिल्ड्रन प्लांट की वैल्यू यहाँ पे 2,31,000 हो जाएगी. 2,10,000 प्लस 21 चिल्ड्रन. देन कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक. एंट्री होगी चिल्ड्रन कनव्स कैपिटल टू रियलाइजेशन एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जो स्टॉक हमने बेच दिया. Then trade creditors took over investment and full settlement, no entry would be passed. Then children, Kanav took over the responsibility to bear expenses at a remuneration of 12,000. Entry would be realization to Kanav's capital 12,000. Children, no entry would be passed for actual expenses because no payment is being done. Question number 21, children. First of all, transfer realization account debit to land and building to machinery to debtors. एंड ऑन द लाइबिलिटी साइड रियलाइजेशन में आप लाइबिलिटीज़ को जब ट्रांसफ़र करेंगे चिल्ड्रन, एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ईपीएफ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. देन चिल्ड्रन एंट्री फॉर एडजस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 430, एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 430. देन चिल्ड्रन बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 225 प्लस 1 चिल्ड्रन 226. देन बैंक अकाउंट, सॉरी चिल्ड्रन, नॉट बैंक टू डेटर्स, बैंक टू रियलाइजेशन 226. Then C part children, bank account debit to realization 25,000. Then Vichal's capital to realization आप entry नहीं कर सकते बच्चों D part में, because here it is written that he took over machinery for cash, मतलब इसने पैसे दिए हैं, तो entry would be bank account debit to realization 2,80,000. Then 50% of the creditors were paid 4,000 less in full settlement and remaining were paid full amount. So children entry हो जाएगी realization account debit to bank. 179 का हाफ कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे उसमें 4,000 और बाकी पूरी वैल्यू. देन चिल्ड्रन ईपीएफ की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 21,000. एंड चिल्ड्रन इन द प्रीवियस क्वेश्चन डब्ल्यूसीएफ के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं था, बट ईपीएफ के लिए भी एडजस्टमेंट नहीं लिखा था, तो आप वहाँ पे भी बच्चों ईपीएफ की एंट्री करेंगे. प्रीवियस क्वेश्चन में रियलाइजेशन टू बैंक 60,000, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 20th. देन चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 21 में आप रियलाइजेशन प्रॉफिट की एंट्री, देन पार्टनर सेटलमेंट. 22nd चिल्ड्रन बेल एंड येल, ये क्वेश्चन बच्चों IC 93 में पूछा गया था. एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स चिल्ड्रन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू मशीन टू फर्नीचर टू डेटर टू स्टॉक. एंड देन फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड चिल्ड्रन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 14,000. देन असेट्स सोल्ड चिल्ड्रन बैंक टू रियलाइजेशन 22 प्लस 75 प्लस 16,000 प्लस 35,000. देन चिल्ड्रन येल ने फर्नीचर टेक ओवर किया, एंट्री वुड बी येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 9,000. देन बेल अग्रीड टू एक्सेप्ट लेस अमाउंट इन 2,500 इन सेटलमेंट, बट इसका लोन था बच्चों 3,000 का, सो लेस वैल्यू पे लोन सेटल हो रहा है. एंट्री वुड बी चिल्ड्रन बेल्स लोन अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक 2,500 टू रियलाइजेशन 500. एंड देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक चिल्ड्रन 2,500 for expenses. Distribution of general reserve children, entry would be general reserve account debit to Bale's capital to Yale's capital 4,000 each. Then children question number 23, Shilpa and Meena. First of all children, entry for transfer of assets, realization account debit to land account to stock account to debtors account. And from the liability side children, it's bank loan account debit, creditors account debit, PFDD account debit to realization. Then general reserve account debit to Shilpa's capital to Meena's capital to Nanda's capital 6,000, 4,000, 2,000. Then children Shilpa ने stock take over कर लिया 35,000 में. Entry would be Shilpa's capital account debit to realization.
and then realization account debit to Shilpa's capital for bank loan 20,000. Then children, bank account debit to realization, इसमें stock का आएगा बच्चों 14,000 and debtors का 8, that is 22. Then again bank to realization 1,10,000 for land children. Then children, typewriter taken over by creditors, so आप इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे. Thereafter children, आप so called realization profit loss की एंट्री करेंगे, followed by settlement among partners. Then children, question number 24, transfer entry for asset, realization account debit to stock, to debtor, to furniture, to plant, to investments. And then for liability children, Mrs. A's loan account debit, creditors account debit to realization. Then children, reserve transfer की entry, reserve account debit to A's capital to B's capital. Thereafter A's capital, B's capital to profit and loss account 7,500 children. Then children, आप बाद में एंट्री करेंगे जो लोन बी का था, एंट्री होगी बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000, बट ये एंट्री बाद में होगी. देन चिल्ड्रन, ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिए और मिसेज ए का लोन भी सेटल किया. एंट्री फॉर टेकिंग ओवर इन्वेस्टमेंट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8,000 and realization to A's capital account 10,000 for loan taken over. Then children, bank account debit to realization, stock 5,000 plus debtors plus furniture plus plant. Then realization to bank 1,600. Then again realization to bank children 37,000. So children, this was the correction of journal entries from T.S. Grewal. Now children, D.K. Goyal, question number 4, 5 and 6. Dipali and Rajshri are partners. Transfer entry children, realization account debit to freehold property, to investment, to debtors, to stock. And from the liability side, sundry creditors account debit to realization 2,000. Then children, PL distribute hoga, entry would be profit and loss account debit to Dipali's capital to Rajshri's capital. Thereafter children, adjustment, Dipali's capital account debit to realization 3,800. Then bank account debit to realization children, it's 18,000 plus 1,800 plus 2,800. Then realization to bank, payment to creditors children 1,900. Then children, expenses on realization of asset, entry would be realization to bank 400. And children, bank to realization 10,000 for typewriter sold. Then children, for profit on realization, entry would be realization account debit to Dipali's capital to Rajshri's capital. Or फिर final payment to Dipali and Rajshri children, entry would be Dipali's capital account debit to bank, Rajshri's capital account debit to bank. Question number 5 children, transfer of assets, sundry debtors ट्रांसफर होंगे बच्चों, स्टॉक ट्रांसफर होगा, एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,80,000, स्टॉक 2 लाख रुपीज़, इन्वेस्टमेंट 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख. एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर चिल्ड्रन, PFDD अकाउंट डेबिट 10,000, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,10,000. देन चिल्ड्रन, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंट्रीज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. ए का लोन बाद में पे होगा बच्चों, जर्नल एंट्री होगी एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. Going down to the adjustments children, plant and machinery taken over by A, it is A's capital account debit to realization. Then B's capital account debit to realization for investments taken over. Sundry creditors को बच्चों स्टॉक 75% पे दे दिया और बाकी कैश हमने पे किया है. तो बच्चों जो स्टॉक दे दिया उससे तो कोई मतलब नहीं है. दैट इज़ यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 2 लाख है बच्चों, एंड इट सेज कि 75% ऑफ द बुक वैल्यू मतलब 1,50,000 का स्टॉक उन्होंने ले लिया, तो बच्चे 60,000 को पे करेंगे बच्चों. रियलाइजेशन टू बैंक 60,000 रुपीज़ फॉर द थर्ड एडजस्टमेंट. देन चिल्ड्रन, बैंक टू रियलाइजेशन, डेटर्स में चिल्ड्रन आप 180 में 36,000 लेस कर देंगे. देन एज लोन वॉज पेड, एंट्री चिल्ड्रन एज लोन टू बैंक. एंड बच्चों क्योंकि आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी उसको दे रहे हैं, दैट इज़ आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो चिल्ड्रन फाइनल एंट्री इज एज लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एज लोन में चिल्ड्रन आप लिखेंगे 50,000, रियलाइजेशन में बच्चों आप डेबिट करेंगे 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट, टू बैंक 53,000. देन चिल्ड्रन, लॉस ऑन रियलाइजेशन 210 की आप एंट्री कर लेंगे, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन. देयर लोन है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए. एंट्री वुड बी लोन एसेट साइड पे चिल्ड्रन, तो डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट करके. एंट्री इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट. Then children, question number 6, transfer of assets. First entry, realization account debit to fixed asset, to stock, to debtors, to furniture, to goodwill. Children, debtors 30,000 पे transfer होंगे. Then for transfer of liability children, provision for doubtful debts account debit 2,000, creditors account debit 40,000, bills payable account debit 10,000, Mrs. A's loan account debit 16,000.
WCR account debit 20,000 to realization account. Then children, first adjustment journal entry A took over furniture. Entry is A's capital account debit to realization. It's 16,000 children. Then bank account debit to realization 55 and 32 makes up 87. Then children, bad debts का मतलब debtors ने 30 की जगह 25 दिया है. Entry would be bank to realization 25,000. Then children, realization to bank 3,000 for expenses. And then realization to bank creditors को बच्चों हम 38,000 पे करेंगे. Then realization to bank 6400. Thereafter children, A के लोन का पेमेंट होगा. Afterwards entry is A's loan to bank. Mrs. A के लोन के लिए बच्चों कुछ नहीं लिखा. Bills payable के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा. But then to in the absence of information we have to pay them. Entry would be realization to bank 10,000. Realization to bank 16,000 for Mrs. A's loan. WCR children, अगर आपने realization में ट्रांसफ़र कर दिया well and good, और अगर नहीं ट्रांसफ़र किया तो आप इसको कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो चिल्ड्रन, ईदर WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल. देन चिल्ड्रन, रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा. एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. चिल्ड्रन, A B C डेबिट हो जाएंगे. इट्स A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. एंड देन चिल्ड्रन, आप पेमेंट करेंगे A B C को. A's capital to bank, B's capital to bank, C's capital to bank. Okay children, so children, match up the journal entries again and check out the ledger postings to be done in a proper manner. Doubts children, if any further, we'll be taking up during live class. Thank you children.